अच्छा, तो हम ऑक्यूपेशनल हेल्थ का चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें जो अब नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हो सकते हैं वो 5 तरह के हैं। नंबर 1 इज़ फिजिकल हैज़र्ड्स। फिजिकल हैज़र्ड्स आर एक्चुअली हैज़र्ड्स ड्यू टू एक्सट्रीम्स ऑफ climatic conditions like temperature, humidity, solar radiation and rainfall. And we know that the people who are working in the agriculture industry, they are exposed to extremes of climatic conditions like temperature extremes होती हैं, humidity, solar radiation and rainfall. तो ये तो physical hazards हो गए due to their working environments या working जो environment की जो related aspects हैं like temperature आता है, उसमें humidity आती है, solar radiation and rainfall है. Second is toxic hazards. We know that in farming they use different kind of fertilizers, pesticides, insecticides, and these are mostly toxic. तो उनसे टॉक्सिक एक्सपोजर भी होता है, जिस तरह हमने थर्ड ईयर में ऑर्गेनोफॉस्फोरस कंपाउंड्स की पॉइजनिंग भी देखी थी, जो कि मोस्टली एज एन इंसेक्टिसाइड यूज़ हो रहे थे ना. So the frequent use of chemicals including fertilizers, insecticides or pesticides produce a greater incidence of toxic hazards in agriculture. तो second कौन से हैं toxic hazards है, first कौन से थे physical hazards. The third is zoonotic diseases. So we know that the farmers who are working in an agriculture setting, they are in a close contact with animals and their products, and that increases their chance of getting zoonotic diseases like brucellosis, anthrax, टेटनस, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, लेप्टोस्पायरोसिस. तो जूनोटिक डिजीज़ की इंस्टेंस में ज़्यादा होती है. फोर्थ इज मैकेनिकल हैज़र्ड्स. सो द एग्रीकल्चर वर्कर्स दे नीड टू यूज़ मशीनरी एंड हैवी मशीनरी एट एग्रीकल्चरल साइट, एंड दैट कॉजेज इंक्रीज रिस्क ऑफ एक्सीडेंट्स, और फिर उनकी उससे मॉर्बिडिटी और मोर्टालिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं बिकॉज दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद दोज हैवी इंस्ट्रूमेंट्स. Okay. Fifth is respiratory diseases. So there's an intense exposure to dust or grains, rice husk, cotton or hay, and these are common where they are grown. So resulting diseases, we have already studied pneumoconiosis in detail. इसके अलावा asthma भी हो सकता है और bronchitis भी हो सकता है due to inhalation of these kind of organic particles. ठीक है. तो जो ऑक्यूपेशनल हैज़र्ड्स हैं रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, दीज इंक्लूड फिजिकल हैज़र्ड्स, जिसमें वहाँ के इन्वायरमेंट से रिलेटेड आस्पेक्ट्स हैं. टॉक्सिक हैज़र्ड्स जो यूज़ ऑफ डिफरेंट केमिकल्स की वजह से हैं. जूनोटिक डिजीज़ जो कि एनिमल हैंडलिंग की वजह से हैं. मैकेनिकल हैज़र्ड्स जो कि वहाँ की मशीनरी की वजह से हैं. और रेस्पिरेटरी डिजीज़ जो कि वहाँ के ऑर्गेनिक डस्ट पार्टिकल्स को इनहेल करने की वजह से, उसको नतीजे में एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, न्यूमोकॉनियोसिस हो रहा है. जूनोटिक डिजीज़ में एंथ्रैक्स, ब्रूसेलोसिस, बोवाइन ट्यूबरकुलोसिस, tetanus and leptospirosis. So that is much about the occupational hazards of agriculture.